Assalamu alaikum. Today we'll talk about Holy Thursday, a poem written by William Blake. The most important thing about this poem is that it is a very simple poem. Its thought is very simple and its content is very simple, and the vocabulary used by the poet in order to write this poem is very simple. It is so simple that it fits in the overall environment of Songs of Innocence, in which this poem was included. तो स्टूडेंट्स इस चीज़ में इस पोएम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसकी सिंप्लिसिटी है, सिंप्लिसिटी ऑफ थॉट है और सिंप्लिसिटी ऑफ डिक्शन है। जो पूरी की पूरी पोएम, इसको समझना बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल नहीं है। एक्चुअली पोएम में एक सीन डिस्क्राइब किया गया है और उस सीन को बहुत ही खूबसूरती से डिस्क्राइब किया गया है। ये सीन है ऑफ चिल्ड्रन गैदरिंग फॉर अ फंक्शन इन अ चर्च, कि बच्चे जो है वो हॉली थर्सडे को एक फंक्शन है, क्रिश्चियन फंक्शन, उसके लिए जमा हुए हैं सेंट पॉल के चर्च में। एंड उनको उनकी जो सारी सिचुएशन है कि वो देखने में कैसे लगते हैं एंड हाउ दे आर बीइंग मैनेज्ड, वो सब कुछ जो है वो इस पोएम में बताया गया है। बाकी जो भी इसमें कंपैरिजन्स किए गए हैं, जो भी इमेजरी इस्तेमाल की गई है, दैट इज़ वेरी सिंपल and it is not difficult to understand that imagery at all. This poem makes a fit subject for children, though it is included in syllabus of MA English for Part 2 students in different universities here in our country. तो क्या है देखते हैं इससे कि it was on a holy Thursday, their innocent faces clean, the children walking two and two in red, blue and green. अब ये फर्स्ट टू लाइंस अगर आप जो है वो देखते हैं, थर्सडे का ये दिन है और इनोसेंट फेसेस क्लीन, बच्चे जो है वो साफ सुथरे हैं। यहाँ से एक चीज़ जो है वो ये भी इन्फर की जाती है कि जनरली दे आर नॉट क्लीन, but on that particular day for that particular function they have been washed and cleaned. और बच्चे जो है वो चल रहे हैं इन द ग्रुप्स ऑफ टू, और वो कैसे रेड है, ब्लू, ग्रीन, ये डिफरेंट कलर्स हैव बीन गिवन in order to describe the clothes of children. Grey-headed beadles walked before with wands as white as snow. अब ये उनके टीचर्स हैं, शायद प्रीस्ट हैं, जो उनके साथ जो है वो चल रहे हैं। उनके पास जो है वॉन्ड्स हैं और उनके कलर भी जो है वो वाइट हैं एज स्नो की तरह से। तो यहाँ पे भी जो है वो आप वो एक प्योरिटी एंड इनोसेंस जो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है उसको आसानी से आप देख सकते हैं। Till into the high dome of Paul they like Thames water flow. और कहाँ पे आते हैं वो? सेंट पॉल के चर्च में आते हैं। and they are moving as smoothly and as naturally as water in a river flows. Okay, oh what multitude they seemed, these flowers of London town. अब उसने इन बच्चों को एक दो चीज़ें जो है वो कहा, एक तो ये हजूम है और दूसरा जो है वो ये लंदन के जो है वो फ्लावर हैं। अब लंदन के फ्लावर जो है वो क्यों कहा है, वो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड के हाउ इम्पोर्टेंस इज़ गिवन टू चिल्ड्रन इन एवरी सोसाइटी। हर माशरे में बच्चों को जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो दी जाती है। और मल्टीट्यूड जो है वो कहना, मल्टीट्यूड अगरचे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जो है वो जाहिर करते हैं एंड इट हैज़ नेगेटिव connotation, but the poet will remove this negative connotation with some more explanation about this word multitude. Seated in companies, they sit with radiance all their own. यानी ये इकट्ठे बैठे हुए हैं और इन पे जो है वो they are radiating in a strange way, and the source of this radiation is their own personality. यानी सोसाइटी ने इनको जो है वो कुछ नहीं दिया, ये इनकी अपनी मासूमियत है।
द हम ऑफ मल्टीट्यूड वॉज देयर बट मल्टीट्यूड ऑफ लैम। अब ये कि ये बच्चे जो है वहाँ पे शोर कर रहे थे, इसमें वो जो एक ज़्यादा हजूम की खसूसियात हैं वो मौजूद थी, लेकिन ये किस किस्म की जो है वो साउंड थी, इट वाज साउंड ऑफ इनोसेंस, यानी ये मल्टीट्यूड था, हजूम था बेशक, तो ये इनोसेंस और लैम्प जो है वो इसको इनोसेंस के साथ कंपेयर किया जाता है। थाउजेंड्स ऑफ लिटिल बॉयज गर्ल्स रेजिंग देयर इनोसेंट हैंड्स, हजारों थे कि ये अपने हाथ और अपनी आवाज़ें जो है वो बुलंद कर रहे थे। थाउजेंड्स ऑफ लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स रेजिंग देयर इनोसेंट हैंड्स, वो अपने हाथ जो है वो बुलंद कर रहे थे। नो लाइक अ माइटी नाउ लाइक माइटी wind they raised to heaven the voice of song. अब they have started singing and they were singing together. The air was echoing with their sound. उनकी ताकतवर आवाज से जो है आवाज जो है वो गूंज रही थी। और like a harmonious thundering the seeds of heaven among, या इस तरह से जो है वो महसूस हो रहा था जिस तरह से जो है वो बादल गरज रहे हो, लेकिन ये बादल गरजना जो है वो सम अनफेवरेबल या सम डिटेस्टेबल सॉर्ट ऑफ साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, बल्कि ये इट वाज समथिंग इन वेरी मच एग्रीमेंट विद द ह्यूमन कंडीशन या ह्यूमन माइंड। उनकी आवाज़ जो है वो ऐसी थी। Beneath them sit the aid men वाइज गार्डियन ऑफ द पुअर, और इनके पास जो है वो प्रीस्ट पादरी जो इनके गार्डियंस थे वो बैठे हुए थे नीचे की तरफ उनकी तरफ। देन चैरिश पिटी लेस्ट यू ड्राइव एन एंजल फ्रॉम योर डोर। तो अब जो कंक्लूड किया है इस पोएम को, उसमें पोएट इज एडवाइजिंग द चिल्ड्रन और एडवाइजिंग द सोसाइटी एट लार्ज दैट दे शुड गिव इम्पोर्टेंस टू पिटी. If pity is not made common in the society, or if pity is not allowed in the society, or if pity does not come at the top when we are dealing with other people or with other things of this earth, we deprive ourselves from the blessing of God. Lest you drive an angel from your door. कि अगर आप में ये खूबी नहीं है तो आप एक फरिश्ते को अपने जो दरवाजे से जो है वो वापस भेज सकते हैं। Students, you can see this is a very simple poem, and in this poem the poet has presented a very beautiful and innocent scene of children taking part in a ceremony held in a church. And finally the poet has concluded this poem with the importance of pity. Pity is a quality which which everyone should have, because with the pity society becomes more tolerant, and if pity vanishes from the society, then blessings of God also vanish from society. Very simple poem, very simply written, content भी simple है, thought भी simple है, और ये poem जो है वो Songs of Innocence में बिल्कुल fit बैठती है। Inshallah, we will be talking about something, some other poem, perhaps Holy Thursday Part 2, which was included in Songs of Experience in our next video lecture. Till then, Allah Hafiz. But मैं आपसे जो है वो ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि इस किस्म के लेक्चर जो है वो आपको किसी को भी जो है वो थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, तो इस चैनल एडमिट पब्लिक को यूट्यूब पर लाजमी सब्सक्राइब करें।